Hi. So, why soft skills are important in business and in employment? Today, we're going to talk about this very interesting topic. Let me give you start with an example. Just in a very simple example, say for example, there are two students, MBA students. Both of them have got more than 9 GPA. Both have done very well in their class test, MBA classes, and you have gone to recruit them. Now, you have to choose only one between the two. Which is the person, which student are you going to pick up? Okay, let me give you another case. Now, there are two sales employees. One salesperson, say both of them are area sales managers. One of the area manager works in a city. And as he works in the city, he has got all the necessary infrastructure with him and does a phenomenal job. He's achieving like 110% of the target. Then there is one area sales manager. He works in the remote area. What he has done is that he has established the network from virtually zilch, and he is now achieving around 90% of the target. So there is a difference in performance. The city guy is achieving 110%, then the guy in the remote area is achieving only 90%. Whom are you likely to pick up for promotion? Interesting, isn't it? And this is important to understand. Very important to understand. But before we move further, let me share with you about the intervention that we are planning very soon. It's called Own Your Next. Own Your Next is for employees who are actually doing very well in their jobs and they want to make a further impact in their job. But it is also for employees who are a bit struggling and who are actually not doing so well, but they know they have to make a mark in their career. If they don't make a mark, they might as well be out of the job very soon. So, in the 2 hour workshop, what we are going to do is we are going to talk about how you can make a difference in your career. What is it that you're actually looking for? And how do you create an ecosystem that will help you achieve what you want to achieve? So if you really like this program, this episode, do comment on it, do share it, and do subscribe to this channel. We'll be more than happy for that. All right. So everybody, I shared with you a very interesting case. So I shared with you two examples. Whom are you going to select? Truth is, both of them are at the same level. Who are you going to select? We'll come to that little later. But in today's world, what is happening? In today's world, it's becoming very clear. The emphasis is more on the hard skills. Okay. So everybody is now getting very tremendous expertise, or gaining significant terms of knowledge in terms of uh, AI or certifications or your academic performance, or you going and learning in the universities, mid-career learnings that they are doing. They are all important. Nobody says no. Nobody says no. But what does hard skill do to you as an employee? They give you good entry level in aspect in your job. They help you smoothen the entry into the job because that's the minimum level of criteria most organizations are looking for. So hard skills are not necessarily your competency. It's actually a minimum level of criteria that you are have to demonstrate or you need to have to be in the job, to be considered for the job, isn't it? That's it. What else does hard skill do? Nothing. It's just a knowledge. Maybe because that will help you do your necessary job that is necessary in a smoother manner. Nothing else. Nothing else. But remember one thing. When you are working in an organization, it's not that you are doing a job. There are organizational dynamics around you.
You take input from others. You when you deliver, you give your output, it goes to somebody else. There are inputs coming in from other people, from colleagues, from management, different places, and you have to interact with so many people. You have to create a presence for yourself, and that's the toughest part. And that's where the soft skills comes in, and that's where you are rated, you are valued, you are considered. You know, that's the part. So if you think, if in your case, for example, you are interacting with so many people, and you don't see, if I give you a, if I give you I put you in a case, for example, I tell you कि ठीक है, you there is a person who is a sales executive. He's doing a wonderful job. Suppose you are a sales executive, you're doing a wonderful job, you are achieving your targets, but you are very crass in your communication. And if given a chance by your manager, do you think your manager will support you in your promotion? No, because in the next level, in the level that he is in, what is very important is that how are you communicating with others? Your quality of conversation becomes more important rather than your job. Your job is at the next level will be getting the work done through people like who he is right now. So the softer things of life, of yourself, becomes, so put it this way, the what is important, that gives you entry, but how you execute, how part of your job becomes a very very significant factor. How you communicate, how you demonstrate, how you solve problems, how you deal with issues, how you interact with others, how do you make a presentation, everything becomes very important. The how of it. Yeah, I remember a very interesting case. This happened to me when I was working in an organization. So one of the person applied for a job. So there was a general manager position open in sales, and so all the senior managers were told to whoever feels they would like to apply, you can apply for the general manager level job. So there's this friend of mine. He applied for it. But then थोड़ी देर के बाद a letter comes to him. You're not shortlisted or not in the final list of people, of senior managers who will be interviewed for the role. Now just think about it. He thought he's eligible. He thought he's doing a great job. He's achieving his targets. He's doing an excellent job in his role. But the management said, "No, we'll not consider him now. Maybe next time." Why do you think it would have happened to him? Why? Think about it. कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो हुआ होगा. Why would it have happened to him? And that's the difference, sir. कभी कभी क्या होता है कि अगर आप सोचते हो कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन जो वो ठीक है, वो आप सोचो, पर दूसरों की नजर में आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा कि आप क्यों अच्छे हो. वो ज्यादा जरूरी है. और जो नेक्स्ट रोल में आपका बिहेवियरल टेंडेंसीज क्या है, वो भी बहुत जरूरी है जानना. तो कभी कभी कुछ लोगों को ये भी नहीं मालूम कि कुछ लोगों को ये भी नहीं मालूम कि भाई आखिर उस लेवल पे हमको चाहिए क्या, कौन कौन से हमको सॉफ्ट स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करने हैं. कभी कभी ये भी नहीं मालूम है लोगों को. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूँ कि अगर फ्रंट लाइन जॉब है, किसी का भी फ्रंट लाइन जॉब है, क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए. अब बस पहला एक तीन चार चीजें और तीन चार सॉफ्ट स्किल्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. वो है कि एक है कम्युनिकेशन एंड एक्टिव लिसनिंग. फॉर एग्जाम्पल, अब बात कैसे करते हो. फ्रंट लाइन लेवल पे आपको बात करना आना चाहिए, but जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एकदम क्लियर रिस्पेक्टफुल एक्सचेंज किया करो बातों का. बातें बड़े क्लियरली, बड़े रेस्पेक्टफुली करो, काम निकलवा लो.
दूसरा होना चाहिए कस्टमर ओरिएंटेशन। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर से कैसे बात करनी है, एम्पैथी हो के, पेशेंस हो के, क्या क्या आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा सॉफ्ट स्किल टू टॉक टू यू नो कस्टमर्स। हो सकता है टीम वर्क में आप अपने, हाउ गुड आर यू एज अ टीम मेंबर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द काइंड ऑफ रोल यू आर प्लेइंग, दैट्स अ बिग स्किल दैट यू नीड टू डेमोन्स्ट्रेट। अडेप्टेबिलिटी, ये भी स्किल, ये भी सॉफ्ट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपको कहीं भेज दिया गया, आपको एक परिस्थिति बहुत कॉम्प्लेक्स होगी, आप अपने आप को कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत मजेदार है, लड़ाई झगड़ा तो होनी है, पूरी कंपनी में आप रहोगे तो बर्तन ठोठा होगा। क्वेश्चन उठता है उस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में आप डील कैसे कर रहे हो। वर्क एथिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपना वर्क एथिक्स क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो ना। अगर आप देखो तो कि सॉफ्ट स्किल्स जो होते हैं, कई तरह के सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, और जो खास आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए तो आपके मैनेजर के नजर में, फॉर एग्जांपल, ऐसा आपको लगना चाहिए कि ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके मैनेजर के नजर में आपको लगना चाहिए ये बंदा बात बहुत अच्छा करता है, क्या सुंदर, मतलब ही अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी वेल, ऐसे उसको, मतलब उनके, वो जब आपके बारे में बोले तो ऐसे बोले, तब आपको लगेगा कि आपका सॉफ्ट स्किल बहुत स्ट्रांग है। या वो बोला यार ये कस्टमर से बड़ा अच्छा बात करता है, ही नोज व्हाट ही टॉक्स, ही नोज व्हाट नीड्स टू बी डन, कस्टमर्स खुश हो जाते हैं इससे। यार ये टीम का बंदा, यार हम लोग को तकलीफ होती है ना, ही इज द फर्स्ट पर्सन हु सपोर्ट्स अस। ना दैट इज द काइंड ऑफ सॉफ्ट स्किल्स यू नीड टू डेमोन्स्ट्रेट। वो मैनेजर तुम्हारा बारे में ऐसे सोचे, ये बंदे को कहीं भी छोड़ दो, अडॉप्टेबिलिटी कहीं भी छोड़ दो, ये कर लेगा। अडेप्टेबिलिटी, इसको छोड़, इसको भेजो तो वो लड़ाई झगड़ा सॉल्व करेगा। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अमेजिंग। तो ये चीजें जो होती है ना, ये जो चीजें होती हैं, जो जो सॉफ्ट स्किल्स होता है, ये आपको नहीं पता चलेगा। आप बिल्कुल आपको नहीं पता चलेगा। ये पता उसी को चलता है, पता उसी को चलता है जो तुम्हारा मैनेजर है, या जो तुमको देख रहा है, जो तुमको ऑब्जर्व कर रहा है, वो समझ सकता है, और कोई नहीं समझ सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात। सो दैट इज द थिंग। एंड एंड लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। अगर आप मैनेजर हो, तो अगर आप मैनेजर, मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे हो, आपको कैसा कॉम्पिटेंसी डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। हो सकता है आपको एक होना चाहिए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, ये बंदा दूर तक सोचता है, वैसी बातें करता है जैसे लगता है कि हाँ समझ रहा है परिस्थिति। वो एक 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 आप एक लीडरशिप प्रेजेंस क्रिएट करते हो अपने, जब आप अपने टीम के साथ बैठते हो तो लगता है कि आप एक, लोग आपको देख रहे हैं, एक प्रेजेंस क्रिएट करते हो। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस फैक्टर बहुत हाई है, ईक्यू बहुत हाई है, आप किसी को भी समझ सकते हो, जान सकते हो, और आप उसी के अनुसार आप बात कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, वाओ, ये तो जूनियर में भी, मिडिल मैनेजमेंट में भी ज्यादा, क्योंकि आपको बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आएंगे, टॉप मैनेजमेंट, कलीग से, डिफरेंट फंक्शन से, नीचे वालों से, कस्टमर से, वेंडर से, कहीं ना, आप कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व करते हो। आप ही सैंडविच बनोगे जब चेंज आएगा ऑर्गेनाइजेशन में। आप चेंज मैनेजमेंट कैसे रोल आउट करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे आप नेगोशिएट करते हो दूसरों के साथ, देख रहे हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, ये ऐसे ऐसे कॉम्पिटेंसीज होते हैं जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करने पड़ेंगे। मतलब ये जो सॉफ्ट स्किल्स है, ये याद रखिए, द हाउ पार्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इवन एज अ मैनेजर। हाउ पार्ट बिकम्स वेरी, सिंपल चीजें हैं, बात करना तो सभी को आता है कि नहीं, बट कैसे बात करना इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजर बनना तो बहुत आसान है, ठीक है, हाउ डू यू बिकम एन इफेक्टिव मैनेजर, वो हाउ होता है, समझ रहे हैं। द सॉफ्ट स्किल्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट देन, I thought I'll just share with you my perspective why soft skills are important. There are lots of things. मैं आपको एक एक एपिसोड में बताऊंगा। इवन आप, अगर आप बिजनेसमैन हो, आप इस चीज को नजरअंदाज मत करो। मैं कल परसों में आपसे एक बार और मिलूंगा। सॉफ्ट स्किल्स एंड बिजनेसमैन, एम्बीडेक्स्ट्रस अप्रोच क्यों रखना चाहिए आपके पास, कुछ सॉफ्ट स्किल्स क्यों डेमोन्स्ट्रेटेबल होनी चाहिए, वो हम बात करेंगे आपसे, ठीक है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। I thought I will just sharing with you everything that I think I understand with this.
बट मेरी नज़र में सॉफ्ट स्किल्स पे आप ध्यान दीजिए. So if you really like this video, I'm sharing, telling you again, please comment on it, please share it, and please subscribe to this channel. We would love to hear from you. So thank you.